Hello friends, welcome to Vocab with Nikunj, and without further ado, let's get started with today's editorial. So we'll review today's editorial and check the difficult words. So it's about tripping trade. Okay, a trade which is tripping means a trade which is moving easily and quickly, which is not very stable. Okay, which is very sensitive. Okay, संवेदनशील trade. All right. On India and its trade stance. What is a stance? Stance is an attitude. Okay, mental attitude. So a rationalized mental attitude is a stance. Means your approach, your outlook, आपकी सोचने का तरीका. तो इंडिया के ट्रेड का तरीका क्या है या ट्रेड का अप्रोच क्या है, वो उसके बारे में बात हो रही है कि इंडिया मस्ट नॉट रिलाई ऑन अ फ्यू लार्ज मार्केट्स, कि इंडिया को बहुत सारा कुछ ही लार्ज मार्केट्स जैसे यूएस हो गया, उनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर क्या कहते हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए, राइट, उनके ऊपर रिलाई होकर नहीं रहना चाहिए, और कोई शब्द नहीं आ रहा है दिमाग में. Alright, but opt for integration with global value chains. But they should go for integration. Integration means getting linked, okay, with global value chain. जो भी global value chains हैं international market में, उनसे integrate होना चाहिए उनको, right? This financial year is off to a subdued start. Off to means getting started with, okay. So this financial year is getting started with a not brilliant start. Subdued means not very brilliant, not very exciting. Okay, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है वो बहुत ही अच्छा शुरुआत नहीं हो रही है, बहुत ही स्ट्राइकिंग शुरुआत नहीं हो रही है व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड फ्रंट पे. ओके, जब व्यापार की बात होती है उस समय. गुड्स एक्सपोर्ट स्लैम्ड टू 34.6 बिलियन इन अप्रैल, द लोएस्ट सिंस लास्ट अक्टूबर. So whatever goods are being exported, they declined. Okay, declined markedly means decline was so much that it could be marked. Okay, to $34.6 billion in April. Okay, and it's the lowest since last October. Okay, तो जो goods के export हो रहा है वो बहुत तेजी से गिरा है. कहाँ गिर के कहाँ पे आया है? 34.6 बिलियन पे आया है, ठीक है, अप्रैल में, और वो अक्टूबर से अब तक का लोवेस्ट है. Okay, the worst month for outbound shipments in 2022-23. सबसे बेकार महीना है, ठीक है, आउटबाउंड शिपमेंट्स का 2022-23 में, ठीक है, pretty easy to understand. This was the third successive contraction in exports and 12.7% before April's number. So third successive means one after the other, continuous. Okay, तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन है ये एक्सपोर्ट्स में, मतलब एक्सपोर्ट्स जो है वो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता ही जा रहा है. इट्स नॉट इंक्रीजिंग, ओके, इट्स ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग. एंड 12.7% बिलो लास्ट अप्रैल्स नंबर्स. तो अप्रैल में जो हुआ था उससे 12.7% नीचे है. सो व्हाटएवर हैपेंड, व्हाटएवर एक्सपोर्ट टुक प्लेस इन अप्रैल दिस मंथ, इट इज 12.7% बिलो इट. Alright, imports shrank by a sharp of 14%. So import जो है वो कम हो गए 14% से, तो 12.7% से बड़ा है 14%. Okay, and that is why it is called sharp. Alright, so imports got shrunk by a sharp of 14% to trip to a 15-month low of under $50 billion. What do you mean by trip over here? Trip means when you trip, ठोकर खाना कहते हैं हिंदी में, तो when you trip you fall. Okay, so it shrunk, import shrunk, and it went down to a 15-month low. मतलब 15 महीने में इससे कम नहीं हुआ था. क्या? $50 बिलियन का, राइट, इंपोर्ट हो गया, कम हो गया इंपोर्ट भी. A slowing global economy had been hurting exports. Global economy is not very fast, it is going slow. Okay, and that is why it is hurting exports. That is means it's not very kind towards export. Export is getting affected through the second half of 2022-23. Okay, pretty easy, with declines in 4 of 6 months. So in 6 months, 4 months it was in decline status. Okay, it was going down. But April's initial estimates are troubling, not just because they represent the steepest fall in recent months. लेकिन जो अप्रैल की इनिशियल एस्टिमेट्स हैं वो ट्रबलिंग है, मींस दे आर नॉट वेरी सूदिंग, दे आर नॉट, दे इंडिकेट सम प्रॉब्लम. ओके, नॉट जस्ट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द स्टीपेस्ट फॉल,
केवल इसलिए नहीं कि वो सबसे जो स्टीप फॉल है वो दिखाती है, सबसे शार्प फॉल है। ओके, स्टीप का मतलब होता है ग्रेटली एक्सीडिंग बाउंड्स और रीजन ऑफ मॉडरेशन, मतलब कि जो नॉर्मल होता है उससे परे, उसके बियॉन्ड। ओके, दैट इज स्टीप फॉल। लेकिन they also signals a sudden shift in sequential momentum akin to the use of emergency handbrakes. Okay. तो जो पहले हिंदी में समझते हैं, then पहले इंग्लिश में समझते हैं, then we try to understand in Hindi. So April's initial estimates are troubling, okay? Not just because they represent the steepest fall. They represent the steepest fall, but this is not the reason why they are troubling. The reason is that they signal a sudden shift in sequential momentum to the use of emergency handbrakes. They are signaling a shift, okay, in the sequential momentum. Now, what is a sequential momentum? That I do not know, but it can be explained. The explanation of sequential momentum is beyond this analysis. Okay, so but it's signaling that, and that is what is troubling, and it is akin to the use of emergency handbrake. Means it is similar to the use of emergency handbrakes. Okay, so if a car is getting stopped, it should stop gradually, right? But if you apply handbrake, it will all of a sudden come to a halt. It may topple as well. So that is the reason. ठीक है, तो अप्रैल का इनिशियल एस्टिमेट ट्रबलिंग है, क्योंकि वो ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे ज्यादा फॉल हुई है रिसेंट मंथ्स में, लेकिन इसलिए भी कि जो शिफ्ट हुआ है सिक्वेंशियल मोमेंटम में वो सिमिलर है इमरजेंसी हैंडब्रेक यूज करने के। ऑलराइट, this March, despite lingering global demand weakness, so global demand weakness is lingering. Okay, so linger means that it is present although it is dying or it is going. That also we can refer to the COVID wave, that it is there. Okay, people are getting affected because of COVID, but it is there. It is dying. It is gradually going away. Okay, the cases are literally coming out to be about 100 to 200 on a daily basis. ठीक है, तो मार्च में ग्लोबल डिमांड वीकनेस बहुत धीमे धीमे जा रही है, लेकिन अभी भी है। लेकिन एक्सपोर्ट्स हैड हिट अ 9-month हाई ऑफ नियरली $42 billion व्हाइल इंपोर्ट्स वर $60 billion। एक्सपोर्ट्स ने हिट कर दिया है 9-month हाई, ओके, और इंपोर्ट जो है वो 60 बिलियन है। ठीक है, तो राइट, ये मार्च की बात है। ओके, तो अभी हमने देखा अप्रैल और मई में नीचे था, लेकिन लेकिन मार्च में ये ऊपर चला गया है। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इनंसिएटेड a $2 trillion export goal to be achieved in 7 years. Enunciate means state clearly. Okay, batana. All right. So the new foreign trade policy clearly put a target of a $2 trillion export. Okay, and that is to be achieved in 7 years. Its first month of implementation could not have been off to a shakier start. That means what they're trying to say is the first month of implementation couldn't have been more shakier. Okay, couldn't have been shakier. Sorry, not more shakier. Shakier. That means that first month of implementation was very shaky in nature. Okay, ठीक है, समझ में आ गया। जो पहला मंथ था वो बहुत शेकी था। The prospects of last year's healthy 14.7% growth that lifted total exports to about 736 billion being replicated in 2023-24 look bleak. जो प्रोस्पेक्ट्स है लास्ट ईयर के हेल्दी 15.7% ग्रोथ का जो दिख रहा था हमें, जिसने टोटल एक्सपोर्ट्स को लिफ्ट किया, ओके, 776 बिलियन पे, ओके, बीइंग रेप्लिकेटेड, इस चीज का कि इतनी ग्रोथ थी और उसने एक्सपोर्ट को भी उठा लिया, इस चीज का रेप्लिकेट होना 2023-24 में ब्लीक लग रहा है। ब्लीक मीन्स ऑफरिंग लिटिल और नो होप, मतलब लग नहीं रहा है कि दोबारा ऐसा होगा। यू अंडरस्टूड इट, राइट? तो द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर्स हेल्दी ग्रोथ व्हिच लिफ्टेड टोटल एक्सपोर्ट्स, दिस is being replicated in 2023-24 looks bleak. Okay, the fact that this will be replicated, this will be repeated, it looks bleak, man, means it will not, it doesn't seem like it will happen. One may draw some succor, okay, from the trade deficit easing to a 20-minute low.
So succumb means assistance in time of difficulty or something positive. So one may draw some positiveness from the trade deficit easing to a 20-month. Trade deficit has gone down to 20-month low. Okay, and from this one may get some positiveness. Okay, but managing the trade deficit cannot be the goal for policymakers. लेकिन policymakers का ये goal नहीं होता है कि वो trade deficit को बैठ के manage करें. Okay. Foreign imports also indicate that domestic demand, India's proclaimed institution against global headwinds, is ebbing, right? तो अगर imports फेल होते हैं, फेल नहीं, फॉल करते हैं, ठीक है, imports कम होते हैं, तो ये दिखाता है कि domestic demand, इंडिया का जो proclaimed insulation है, ठीक है, insulation मतलब कि state of being isolated or detached, कुछ भी एक प्रोटेक्शन देने को इंसुलेट करना कहते हैं. तो इंडिया का प्रोटेक्शन क्या है? अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल जो हिंडर करते हैं इंडिया के सक्सेस को या प्रोग्रेस को, उनके खिलाफ इंडिया का इंसुलेशन क्या है? डोमेस्टिक डिमांड. ओके, ठीक है, ये है इंडिया का इंसुलेशन. और ये डिमांड जो है वो एब हो रही है. एब मींस डिक्लाइन हो रही है, कम नीचे जा रही है. राइट, समझ में आ गया? Falling imports also indicate the domestic demand. There is domestic demand, okay? And what is domestic demand? It is India's proclaimed insulation, means something which protects India. Protects against whom? Protects against global headwinds, global entities which cause hinder to India's progress. And this demand is ebbing, it is falling, okay? It is declining. Moreover, when imports of petroleum and gems and jewelry plummet, they also affect exports of value-added end products. So, when petroleum products, gems and jewelry, their imports plummet. Plummet means drop sharply, go down. Okay, their imports go down. They also affect exports of value-added end products. Okay, because petroleum is a source of probably energy, right? Gems and jewelry are the source of raw products, right? They are raw products. So when their import go down, the export of value added end products because of which they are made, they also will go down, right? That is what I'm trying to say over here. Petroleum exports shrank in 17.5% in April, while jewelry shipments shipped at 30%, marking the 7th contraction in 10 months. Even other job creators such as textiles have been hit hard. It's pretty simple, right? Petroleum exports shrank, they went down, okay? Jewelry shipments slipped at 30%, they went down 30%. And it marked the 7th contraction in 10 months. Even other job creators such as textiles have been hit hard. Even textiles industry has been hit hard. That commodity price have cooled from last year is that only one reason. This shirt is cool, right? So what is cool? What does cool mean here? Cool means lose intensity, lose the speed. Okay. So commodity prices have cooled means commodity prices have gone down. Okay. From last year, and this is only one reason for the shrinking trade basket. Okay, commodity prices have gone down, and this is a reason for the trade basket which is shrinking, which is becoming smaller. Officials concede there does not seem to be any immediate respite. Officials जो हैं वो admit करते हैं, स्वीकार करते हैं कि अभी कुछ ऐसा immediate respite नहीं दिख रहा, कोई relief नहीं दिख रही. Okay. Likely from faltering global demand. Global demand से कोई राहत नहीं दिख रही. Okay, pretty simple, right? China's opening of the economy may have prompted a global trade growth forecast hike. China का जो economy open हो रहा है, उसने prompt किया है global trade growth forecast hike का, ठीक है? From 1% to 1.7% for 2023 from the WTO. लेकिन recent Chinese data जो है, वो है about the recovery momentum. कि कैसे रिकवर करना है. ओके. Reluctant European and North American markets are only expected to speed up goods orders. जो European and North American markets हैं, they are reluctant. Okay, they are not very excited or they are hesitant. They are only expected to speed up goods order. They will speed up means cause to move faster. So they will give more good orders by September for the festive season, while services exports that have held up through the recent trade turmoil may slow too.
सो जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं which have held up through the recent trade disturbance, those will also slow down. And India must use this slack period. Slack period means जो थोड़ा घुमा फिरा के चल रहा है, जब किसी चीज में तेजी नहीं है, एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, इंपोर्ट डाउन हो रहा है, राइट, प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, तो इस जो स्लैक पीरियड है जिसमें रिगर नहीं है, ओके, तो इंडिया को इसको यूज करना चाहिए किस चीज के लिए, रिव्यू करने के लिए अपने ओवरऑल ट्रेड स्टैंड को, ओके. द रिलायंस ऑन फ्यू लार्ज मार्केट, द fact that they are relying on few large markets, they should also review that and pursue greater integration with global value chains. They should go for greater integration, okay, integrate with global value chains and multilateral trading arrangements, okay. These would yield better outcomes. ये जितनी चीजें ऊपर गिनाई गई है, 3-4 चीजें, वो better outcomes देंगी, better results देंगी than fresh measures, okay. फ्रेश मेजर्स की जगह पे ये सारे स्टेप्स बेटर रिजल्ट्स देंगे. क्या चीज करने के लिए, होल्ड डाउन करने के लिए इम्पोर्ट बिल को रिस्ट्रेन करने के लिए. ऑलराइट, इजी, समझ में आया आपको? ठीक है. लेट मी नो व्हाट डिड यू हाउ डिड यू लाइक टुडे सेशन. एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वर्क और ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तो देखिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू. बाय बाय.